हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन म्यूचुअल फंड्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जेएम फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ओके, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं जेएम फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। वेरी हाई रिस्क इक्विटी फ्लेक्सिकैप 26.09% 3-year annualized. This is a technical chart. JM Flexicap Fund direct growth. Okay, NAV net asset value 9/5/2024 93.75 rupees and the rating 5 star. Minimum SIP amount rupees 100 and fund size 1437 crore. Okay, return and return calculator and holding 55, top 10 holdings, assets Bank of Baroda, State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, Larsen and Toubro, NTPC and Hague Limited. Okay, return and ranking. Equity Flexicap category annualize. Fund returns 1 year 56, 3 year 26 and 5 year 24 and all 18.7. Okay, similar funds. Okay, expense ratio, exit load and tax. Expense ratio 0.57 inclusive of GST. Exit load of 1% if redeemed within 13 days. Stamp duty on investment 0.005% from July 1st 2020 and tax implications. Returns are taxed at 15% if you redeem before 1 year, and after 1 year you are required to pay LTCG tax of 10% on the return of rupees 1 lakhs plus in a financial year. Fund management Satish Ramanathan and Chaitanya Choksi and Gurivinder Singh Vasan. President. Okay. Fund house investment on objective. Rank total assets 32 #32 in India. Total asset under management 5,474 crore. Debt to incorporation 15 September 2024. Okay, JM Financial Fund House investment objective. Okay, so guys, this is a technical chart. JM Flexicap Fund direct plan growth 26.09% 3-year annualized return. Very high risk equity Flexicap. ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।